Okay, welcome Abhishek. So we will set up the AWS EC2 instance for Spinny damage inspection API project. So this instance which we will be creating will be used for model training. Though it will not be a GPU instance, जो हम अभी जब हम ट्रेनिंग जो हम डिस्कस करेंगे कि हाउ एक्चुअली एट प्रोडक्शन इट वाज डिप्लॉयड, सो वो इंस्टेंस दूसरा है. अभी हम एक फ्री टियर इंस्टेंस यूज करेंगे सो दैट कोई बिल्स ना जनरेट हो. ठीक है. ट्रेनिंग में इनफैक्ट टाइम लगेगा काफी दिन का, बिकॉज लो कैपेसिटी फ्री टियर इंस्टेंस होता है. बट ठीक है, कोई बात नहीं, वो पीछे ट्रेनिंग करता रहेगा. एटलीस्ट हमें आइडिया लग जाएगा कि हाउ ट्रेनिंग्स आर हैपनिंग अक्रॉस सीपीयूज एंड जीपीयूज. ठीक है, बोथ वेज. नाउ Okay. सो you have to go to EC2 services, go to search at the top. सर्च बार पे क्लिक कीजिए और EC2 टाइप कीजिए इसमें. EC2 stands for Elastic Compute and these are virtual servers in the cloud. Okay. इसी को हम इंस्टेंस बोलते हैं. EC2 instance. Okay. You can click on this. Okay. And what is this? Complete your, thanks for signing up. If we have directed you to this page, you have not either finished registering on your account, is currently on a free plan. Free account plan access limitations. Certain services which is upgraded. Complete your AWS registration. Okay. Okay, great. So now we see we have $100 credits. So within this we have to ensure कि हमारी सारी ट्रेनिंग रेटिंग इसी $100 के अंदर हो जाए. ठीक है. So Okay. let's click on launch instance. We will create one Ubuntu server. ठीक है. Okay. You can name this server as damage inspection. Go to the first. Scroll up करो. भागो मत, आगे पीछे ना, स्क्रॉल अप करो. हाँ, name, yes, click here, type damage inspection. ठीक है. Now let's scroll down a bit. Second option is application and OS images. So इसमें we will select Ubuntu. Okay, select Ubuntu and let's see what is the machine type. Free tier eligible. Ubuntu server 26.04. Yeah, this is fine. Okay, let's go next. Scroll down. Then it is saying, okay, Ubuntu would be the official username of this AMI. It will be a 64-bit architecture. It is fine. Let's go down. Then you have T3 Micro. So it will offer you 2 CPUs, 1 GB memory. And this is also free tier eligible instance. So we will be using T3.micro. Okay. You can click on this and you will see all other types of options which are here. ठीक है. फ्री टियर एलिजिबल में T3 माइक्रो है, T3 स्मॉल है, बट द यूजेज पर आवर इज डिफरेंट, द बिलिंग इज डिफरेंट, USD, so since you have already opted for free tier, so you cannot select other instances. Okay, so either you can use T3 micro or T3 small. Any of these two instances you can use. So T3 small is around 2 GB. It is 2 GB memory, 2 CPUs. ठीक है. And it is ठीक है. तो 2 GB memory यूज कर लेते हैं. Okay. ठीक है, या 1 GB यूज कर लो. वैसे ट्रेन तो दोनों ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज बड़ा डेटा सेट है ना. ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट हमारा कॉन्सेप्ट तो हम चेक कर लेंगे. ठीक है, 2 GB रैम के बजाय 2 GB रैम ठीक है. बाद में हम इस इंस्टेंस को स्टॉप करके प्रैक्टिस करने के लिए 1 GB पे प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है, अभी हम 2 GB वाला ले लेते हैं. ओके, नाउ यू कम डाउन, स्क्रॉल डाउन. सो वी सेलेक्टेड T3.small. ठीक है. नाउ क्लिक ऑन क्रिएट न्यू की पेयर. You have to create a new key pair with which we will connect with this instance. So इसका की पेयर का नाम डाल दीजिए. Let's say damage inspection, damage underscore inspection.
keep lower names and with underscore. Yeah, damage inspection. This is fine. You can select RSA. You can use PM key. What is your system? Is it Windows. It is Windows ना. So Windows में हमें PowerShell यूज करनी पड़ेगी. .pm यूज कर लेते हैं. ठीक है. हम GitLab भी इंस्टॉल, Git Bash भी इंस्टॉल कर लेंगे अभी. ठीक है. Git Bash would help us connect with these instances like Linux or a Mac machine on Windows. Okay. So click on create key pair and we will be using .pem format. Okay. Yes, sir. This file is downloaded. .pem file. Yeah. PM stands for privacy enhanced mail. Okay. Okay. Privacy enhanced mail is the full form of PM file. ठीक है. अब ये damage inspection डाउनलोड हो गई. ये वाली फाइल .pm फाइल. Make sure you keep it at a right place and send this you can keep it at a directory जहाँ पे आप इसको easily access कर पाओ and you don't forget it. ठीक है. Now network settings are fine. Scroll down. Allow HTTP traffic, allow HTTPS traffic. This you can turn on. Other rules we will write when it is required. Scroll down a bit more. So storage would be 8 GB. We might be, we need more space because our data set is big. So for now, what you can do is you can keep it, let's say 100 GB for now. Okay. We will use 100 GB space. Then let's go down. Then we have a file system. This is fine. Okay. Now you click on launch instance on the right side. So what is this file system, sir? These are file format systems. We have S3 जैसे Windows में NTFS होता है, New Technology File System. पहले FAT32 होता था. फैट फाइल सिस्टम. सिमिलरली क्लाउड के पास और भी अलग अलग एनहांस्ड फाइल सिस्टम्स हैं. जैसे EFS जो होता है वो एनहांस्ड फाइल सिस्टम है विच गिव्स यू मोर बाइट स्पेस जिसके थ्रू आप फास्टर एक्सेस कर सकते हो फाइल्स के साथ. सो S3 है जो Amazon का स्टोरेज S3 है, उसका फाइल फॉर्मेट सिस्टम है, हाउ दे एक्सेस लार्ज डेटा. एंड FSX है. दीज आर सम ऑफ दीज मे बी अ बिग डेटा फाइल सिस्टम. जैसे बिग डेटा का अपना एक फाइल सिस्टम होता है जहां पे आप 32 GB का एक ब्लॉक साइज होता है. यू कैन एक्सेस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन पर CPU आइटरेशन. सो इसका सारा खेल है, मतलब हर एक इंस्ट्रक्शन में कितना प्रोसेसिंग कर सकते हैं. सो उससे फास्ट हो जाता है. जैसे पहले कंप्यूटर्स होते थे 8 बिट होते थे, यानी एक CPU इंस्ट्रक्शन में 8 बिट प्रोसेस हो सकता था. आज की डेट में 64 GB भी प्रोसेस हो सकता है. मतलब दैट इज हाउ बिग फाइल सिस्टम्स कैन सपोर्ट. Yes. Okay. So for now, I should select none. None is fine. It will give you the default Linux EFS file systems. Okay. Now go on the right hand side and click on launch instance. Okay. Now you can click on that instance ID. Yeah. Yes. Now the instance is ready. And you will be able to find your instance here. When you open EC2 services, on the left hand side, you will find this instances section. And there you can find out all your instances which are running or, now what do we have to do? Now we have to connect to this server. Okay. And before that, we have to give some permissions to the PM file. We have to give that PM file chmod 400 permissions so that it can be used, on a local machine in order to connect to this server. So what you can do is just go to a new tab and download git bash. Go to a new tab and download git bash. Git bash for Windows. Yeah, the first one. ये भी ठीक है. Download. वैसे हम Windows PowerShell
कर सकते हैं, but Git, this is good. yeah. No, I this is have GitHub. Desktop no. won't work. You need Git Bash. Git Bash is a Linux console. It will give you Bash access on Mhm. command line, just like a Linux interface Oh, on okay. Windows machine. तो हमें PowerShell नहीं यूज करना पड़ेगा, हम इसी के थ्रू यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाय द टाइम दिस इज गेटिंग इंस्टॉल्ड आप एक काम करो, आप अपना माई कंप्यूटर ओपन करो, ओपन माई कंप्यूटर, और जो फाइल है उसे एक ड्राइव में ले जाओ, मे बी सी ड्राइव, डी ड्राइव, वॉट एवर यू हैव, टेक इट टू अ प्रॉपर ड्राइव, या सेलेक्ट दिस फाइल एंड टेक इट टू गो टू दिस पीसी। नहीं, यहाँ पे मत बनाओ, डी ड्राइव में बनाओ, किसी भी नॉर्मल ड्राइव में एक बनाओ, वरना बहुत बड़ा पाथ एक आ जाएगा अननेसेसरी। सर एक ही ड्राइव है इसमें सर। एक ही ड्राइव है, दिस पीसी में क्या है, सी ड्राइव है, क्लिक करना। ओके, ठीक है, वेरी गुड, कीप इट अप। इससे प्रॉब्लम होगा क्या सर? तो फिर क्या ही प्रॉब्लम, हैं? क्या ही प्रॉब्लम होगा, मैं भी एक ही ड्राइव यूज करता हूँ। नहीं नहीं, मेरे पास तो क्या मल्टीपल ड्राइव्स है, अच्छा, नहीं सर कंपनी से पर हुआ मैक है। वैक में तो सिंगल ही चलता था, तो कोई इतना फर्क नहीं हम्म, पड़ता। कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना चाहिए, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए इजी होना चाहिए, बाकी तो आप कहीं पे भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, शुड बी। 16 GB है सर इसमें, मतलब खाली कर लूंगा मैं और। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नाउ लेट्स गेट बैक टू दैट, द टैलेंट ग्रिड, वेयर यू हैव केप्ट योर फोल्डर, डैमेज इंस्पेक्शन के अंदर पेस्ट कर दो फाइल, पीएम फाइल। ठीक है, नाउ सी, ये डाउनलोड हो गया, गेट बैश, अभी प्रोग्रेस चल रहा है, क्लिक ऑन गेट बैश, लेट इट कंप्लीट। यस सर, डन। लॉन्च गिट बैश। यस, लॉन्च गिट बैश। यस सर। ठीक है, ओपन दैट गिट बैश, यूज कंट्रोल एंड वो माउस का अपर स्क्रॉल यूज करना, इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ दिस सो दैट दिस इज विजिबल।
Control and yeah, and make it big. Maximize this. Yeah. Now you do copy that. Use cd slash downloads cd space slash backslash. On this, backslashes would work. Okay. Yeah. So now you type downloads and use tab key only, then we'll be able to see whether the path exists or not. Just remove this and click on pwd. Just remove this statement. Just remove this line and type pwd, print working directory. So you are in C users epidel. Type ls. Do you have a downloads directory here? Yeah, type cd. There would be a downloads directory. Yeah. Use clear, CLEAR, clear. Yeah. Type cd downloads, capital D, and tab. Don't type, just use tab key. So move this downloads. CD download. After CD slash the tile grid. No, N. You have to type some piece of it. Let's say type THE and then press tab. THE, yeah, then press tab. The tile grid, yeah. The tile, type T as well. Uppercase T, yeah, then type tab again. Okay, slash. Now, damage inspection. नहीं साइंट था ना, साइंट फोल्डर के अंदर डाला था ना, CYENT टाइप C. CYIENT science / damage _ inspection. Yeah, press enter. So now you are in this directory. That's why I was saying keep it in a normal directory. नहीं तो क्या होगा कि इतने बड़े बड़े पाथ आएंगे ना, तो फिर it will be hard to manage, copy paste ये सब करना. ठीक है. Anyways, now you type chmod. Now we are giving 400 permissions to the PM file so that we can connect. Otherwise क्या होगा कि connect नहीं करेगा. चलो दिखाता हूँ क्या होगा. आप ऐसा करो, पहले आप डालो SSH. Type SSH. SSH stands for secure shell. So one thing, like I can change this, like I can just remove this, move this damage inspection folder only parallel to downloads. So path बच जाएगा. हाँ कहीं अब तो ठीक है, कोई बात नहीं, डाल देना बाद में, नो प्रॉब्लम. ठीक है बाद में. ठीक है. टाइप दिस. मैं नीचे लिख रहा हूँ SSH-interact. एग्जाम्पल दूंगा. PM फाइल आ जाएगा. PM फाइल देन आ जाएगा Ubuntu @IP address. I'm just typing it here. ठीक है. So this is what you have to type. SSH stands for secure shell. ठीक है, मैं लिखता भी जाता हूँ. SSH stands for secure shell. ठीक है. अब ये .pm ऐसे नहीं लिखना. -i का मतलब है आइडेंटिटी. आप पूरा मत लिखो, सिर्फ SSH लिखो. जो मैं बोल रहा हूँ उतना ही लिखो. PM हटा दो. ये तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए सिर्फ नीचे लिखा है. SSH के बाद हम एक ऑप्शन यूज करेंगे -i. -i स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी. ठीक है. -i का मतलब है आइडेंटिटी. Who is connecting to the server. ठीक है. That is what is identity. So आइडेंटिटी हमारी क्या है? PM फाइल हमारी आइडेंटिटी है. ठीक है. तो स्पेस देके डैमेज इंस्पेक्शन, नहीं -i तो रहने ही दो. -i स्पेस then you have to type damage _ inspection.pm, जो आपका फाइल का नेम था.
the folder name and then file No, name. not Or folder name. only You are already in the sorry. folder. Just you have to put the file name. Yeah, Okay. just this name with the PM file, with the PM extension. .pm ये पहले 200 आ गया, वो भी हटा दो। ठीक है, सो नाउ यू गॉट द फाइल। ये हो गई आपकी आइडेंटिटी। अब आपको क्या करना है, स्पेस देके यू हैव टू कनेक्ट द सर्वर। ठीक है, सो अब आपको स्पेस देके लिखना है उबुंटू। उबुंटू इज द यूजर नेम। ये कैसे पता चला उबुंटू यूजर नेम में, वहीं दिखा दिया था उसने, जब इंस्टेंस बना रहे थे तो उसने दिखा दिया था यूजर नेम इज उबुंटू। टाइप उबुंटू, Okay. UBUNTU, उबुंटू @ and just get the IP address of the server. Just get back to the AWS server. There you will find the IP address of the server, which is this 34.237.145.3. You can copy this. Okay. So public वाला ना, Yes, public IP. public IP address लेना है। प्राइवेट तो उनका इंटरनल आईपी एड्रेस है, उसके थ्रू कनेक्शन करते हैं। वी वोंट बी एबल टू कनेक्ट टू प्राइवेट आईपी। ठीक है, नाउ गेट बैक, या पेस्ट। ठीक है, नाउ प्रेस एंटर। अब जब आप करोगे तो आपको 400 एरर दिखाएगा, मतलब इट विल शो यू सम एरर। इट विल से दिस इज नॉट अलाउड और समथिंग लाइक दैट। अच्छा आ रहा है, चलो बोलो यस। नहीं है। यस करो, यस। Are you sure you want to continue कंटिन्यू connecting? कनेक्टिंग, Yes. यस। ठीक है, परमानेंटली एडेड टू द लिस्ट ऑफ कोर्स। ठीक है, अच्छा है, चलो अब नहीं जरूरत है परमिशन की, आई थिंक उन्होंने फिक्स कर दिया इसको ऑलरेडी। ओके, सो नाउ वी आर कनेक्टेड टू दिस आईपी एड्रेस। ठीक है, यूज क्लियर Yes, एंड sir. टाइप uname -a। No. Ubuname. uname -a। So uname. uname stands for default username of the OS, and -a is a flag just to display the name. So this is a Linux instance with that private IP address. This is an Ubuntu server, which is a GNU Linux machine, which is a 3264-bit supporting system. ठीक है, क्लियर? अब आप क्लाउड से कनेक्ट हो गए हो। ओके, तो अब आपने क्या कर लिया, एक AWS पे सर्वर बना लिया, और अब आप उस सर्वर से कनेक्ट हो गए। ठीक है, समझ गए? क्लियर कर लो इसको। सो now you should remember that this is how we connect the server. So whenever next you have to connect the server, you will get into this directory and connect using SSH with this server. ये वाली command डालोगे, SSH interact, SSH hyphen identity, the name of the identity file, and username Ubuntu @IP address. Okay, this is how you will connect. Whenever you forget any command, you can type history and you will get a list of all the commands. इसमें आप हिस्ट्री डाल सकते हो, HISTORY, हिस्ट्री। इट विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ ऑल द कमांड्स व्हाटएवर यू हैव एग्जीक्यूटेड। तो नहीं आ रहा, SSH वाला अरे नहीं ये है तो इसमें। ये तो उस पे आ रहा है ना, उबुंटू के सर्वर पे पहुंच गए हो ना, जब एग्जिट करोगे तब इसकी दिखाएगा। ये तो दोनों ओके कमांड ओके। उसकी हैं जो क्लाउड पे डाली है। हाँ, यहाँ से जब एग्जिट करोगे देन यू विल कम बैक टू द सेम सर्वर। टाइप एग्जिट। now you type history here. This is your local machine. Here you will find all your commands. Okay, so SSH interact damage inspection। कभी किसी दूसरे के कंप्यूटर में जाके देखना है कि ये क्या कर रहा था ना, तो हिस्ट्री खोल लेते हैं, पता लग जाता है क्या क्या किया है सही है, सही है। ठीक है, बट मतलब ऐसा होता है, जरूरी वहां पे होता है, जैसे कोई पहले बंदा था, वो कोई सर्वर पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहा था, वो चला गया लास्ट मोमेंट पे, केटी नहीं कर रहा था ठीक से। सो व्हाट विल यू डू, हाउ विल यू गेट टू नो कि इसने क्या क्या काम किया है? So you will go to history, download all his commands, put it to ChatGPT and ask him to organize it for your project. You will get a list of all the commands which is required. तो अगर वो केटी करे चाहे नहीं करे, जो भी उसने एग्जीक्यूशन किया था, you will have a complete access to it. Okay? ये बट ये कोई डिलीट नहीं कर सकता हिस्ट्री इस पे? कर सकते हैं, पर पता ही नहीं होता, इतना दिमाग कहाँ होता है लोगों के पास। ओके। जब तक रिलीविंग लेटर नहीं मिल जाता तब तक कोई खेल नहीं खेलता ना।
और बैलेंस सैलरी नहीं आ जाती। Yeah. ठीक है, तो कोई डिलीट नहीं करता, मतलब ऑब्वियस, टू कीप देमसेल्फ प्रोटेक्टेड। एनीवेज, यू गॉट द पॉइंट आई थिंक। ओके।